Out on a 40-day-long parole, rape and murder convict Gurmeet Ram Rahim addressed a satsang virtually on October 19th on Wednesday. Now, in the satsang taking place in the Karnal district ahead of the Haryana Panchayat elections, the candidates were seen seeking blessings from the erstwhile Love Charger Baba in the presence of Municipal Corporation Mayor Renu Bala Gupta and Deputy Mayor Naveen Kumar. Now, Republic has confronted Karnal Mayor, who tried to brazen out her presence at the event. Let's listen in. तो आपने हमने वो वीडियो में देखा कि आपने गुरमीत राम रहीम को इनवाइट भी किया कि करनाल आइए, स्वच्छता अभियान चलाइए। तो आपको लगता है कि एक रेपिस्ट बाबा अभी भी सामाजिक है? देखो, अब वो जो हैं उसके लिए न्यायपालिका ने जो उनके लिए आदेश किया हुआ है उसकी वो सज़ा भुगत रही है। और मैं ये समझती हूँ, जब वो करनाल आए थे, मैंने सिर्फ ये बात उनके आगे रखी कि जब वो आए थे एक स्वच्छता का संदेश उन्होंने दिया था, और उनके कहने से हमारे शहर में चाहे वो नाले हैं चाहे नालियाँ हैं, स्वच्छता के लिए मैं ये नहीं कहती कि आम लोग इस बात के लिए नाले नालियों को साफ़ करें, बल्कि अपनी स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारियों को निभाएं। यदि किसी के कहने से कोई व्यक्ति यदि स्वच्छता की जिम्मेदारियों को निभाता है तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया, और मैं ये समझती हूँ कि स्वच्छता हमारा परम धर्म है, और इसी के लिए मैंने उनसे उनके ये पता था कि इसके पीछे गुरमीत राम रहीम है, एक रेपिस्ट बाबा है, ये सब जानते हुए भी आपने उनको इनवाइट किया करनाल में? देखो, मैंने कहा ना, मेरे शहर के लोग हर एक जो आप जैसे भी कह रहे हैं, मेरे शहर के लोग उसमें हर एक कोई हर दुर्घटना में शामिल नहीं था। वो सच्चे लोग हैं और उनकी सहयोग से हम शहर में व्यवस्थाएं करते हैं। तो उनके सहयोग से यदि हम कोई कार्यक्रम करते हैं, उनके सहयोग से स्वच्छता करते हैं, तो उसी संदेश को लेकर मैं वहाँ गई थी। मतलब आपकी बातों से मैं ये मानूं कि कल को अगर गुरमीत राम रहीम जो कि रेपिस्ट बाबा है वो करनाल में कोई अपनी सत्संग करते हैं तो करनाल की मेयर उनको वेलकम करेगी? देखो, मैंने कहा ना, ये उस समय की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मेरे करनाल के लोग स्वच्छता में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जैसे करनाल हम चाहते हैं कि कोई भी व्यवस्था में स्वच्छता परम धर्म है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो किसी के भी कहने से स्वच्छता करें तो हमारा शहर आगे बढ़ेगा। तो कल को कोई आतंकवादी आके करनाल में स्वच्छता करेगा तो आप उसको भी बढ़ावा देंगे? नहीं, मैंने उनको नहीं बढ़ावा दिया। आप बार बार इस बात के लिए ना करें। जो बंदा जो इंसान नहीं मैम, जो इंसान एक रेप कन्विक्ट है, जो रेपिस्ट के नाम से जाना जाता है, वो एक कैरेक्टर है, वो खुद में एक कैरेक्टर है, और उसके लिए न्यायालय उन्हें पूरी तरह से जो न्यायालय उन्हें सज़ा दे रहा है या जो भी वो भुगत रहे हैं, वो न्यायालय सक्षम है, और हम उनका पूरे अपने न्यायालय का सम्मान करते हैं कि वो जो भी कार्रवाई करता है वो निष्पक्ष होकर हर तरह से करता है। मैं उनको अपने न्यायाधीशों को इस बात के लिए प्रणाम करती हूँ कि आप कोई भी निष्पक्ष निर्णय करते हैं तो उसमें पूरे समाज पूरी तरह से सहयोग करता है। For more information on this, we're cutting across to Amandeep, who's joining us, who also was in conversation with the Mayor Renu Bala Gupta. Amandeep, very good morning to you. Obviously, the reaction that is coming in is totally downplaying it and it's brazen in nature. But what are the other reactions that we're getting in at this moment in terms of the visuals that we'd seen earlier yesterday of all these BJP leaders, attending this virtual satsang? Well, Navedna, one by one we have asked several questions to Mayor, hard-hitting questions to Mayor, that what was the reason behind taking the blessings of the rapist Baba, and despite knowing that he was involved and in the crimes act, in fact a convicted rape and murder convict, he is serving the sentence. Still, in every question, Mayor of Karnal Renu Bala tried to justify her position, and in fact saying that Baba was running a Swachhta Abhiyan, and that is the reason she has invited her to the Karnal to continue that Abhiyan. The question is that the intention is questionable, right, of rapist Baba. The intention of questionable is rapist Baba, and in fact if he is running a Swachhta Abhiyan, how come you make every allegation and every conviction clear from his character?
This is a big question, and being a lady mayor, she is still inviting the person who is declared as a hardcore criminal by CBI court. And even despite knowing all these facts, that his intention is not very much pure so far, and he is a criminal. He was on the parole for 40 days and with a certain kind of restrictions as well. And she knows inside out of Gurmeet Ram Rahim, and still she was trying to justify her position that the people of Karnal have invited her to join that conference, and later on she has invited the Baba, rapist Baba in fact, to join the Swachhta Abhiyan in Karnal just because he had earlier done a wonderful job. What kind of wonderful job he have done? What kind of wonderful? These are the several questions, and in fact, if there is a political motive and these politicians has went beyond the lines to gather the votes, is this the kind of politics they wanted to set? She is a mayor of Karnal. She has an example. Some people believe her, follow her line, and still she is doing, and she is bowing down in front of a rapist Baba and inviting him to come to Karnal and continue the Swachhta Abhiyan. The person who has actually raped, murdered, and later on when CBI court convicted him, he hatched the conspiracy how to put pressure on the CBI court by through the source of violence in Panchkula, in several cities of Haryana, and even several cities of Punjab as well. That person, can you believe that person can run a Swachhta Abhiyan and a pro-social character? This is how she was trying to justify the position, but that had not happened. Every single question was hitting her back, and even still the questions are arising now. Either the party is going to take any action against mayor, or she will be left like this only. Yes, Naveed. Right. Thank you, Amandeep, for getting us, all those inputs on this particular story. Like, of course, Amandeep also pointed out, we'll have to wait and watch if any action will also be taken in terms of this particular event that we did see BJP leaders openly, of course, attending this particular event that was organized by the rape convict Ram Rahim Singh. Now, moving on to other topics.